हम देख रहे हैं 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स, जिसका एक्सरसाइज है 1.3। तो 1.3 में से आज हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 4 एंड द नेक्स्ट एग्जांपल फ्रॉम इट। ओके, इसके लिए मैं सतीश आपका स्वागत करता हूं एससीबी लर्निंग में। आज हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। इसके लिए तो चलो डायरेक्टली जाते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 4 पे। व्हाट एग्जांपल नंबर 4 सेज इज नथिंग बट write down all the subsets of the following sets. Okay, you need to write the subsets of following sets. You know the definition of subsets. Subsets are nothing but if suppose A is a set. Okay, A is a set, then set B is said to be subset of set A. Okay, mark my words. I am saying B is a subset of set A if for all A belongs to B belongs to small b belongs to capital B, this B must be in A. Okay, what it implies to say check whether B is subset of A or not. That times you will check all elements of B are in A or not. If all elements of B are lying in A, that time you will say your B is subset of A. This is our definition of subset. Now we will see one by one example here. We will find subset of each case. Okay, first case क्या कहेगा? First case में तो बहुत सिंपल दिया है, उसमें तो आपको within a fraction of seconds you can calculate subsets of that set. First case मिल रहा है आपको, first case set is nothing but singleton A. Okay, singleton A में क्या आएगा? This is my case 1. I will write sets here. Okay, and the collection of subsets right here. Okay, where it is in first case I am set as singleton A. Okay, this is my set A, and now I want to calculate subset of these sets. Now बच्चों आपको पता है what is subset of any set? 5 is always सबसेट ऑफ एनी सेट। बाय डिफॉल्ट उसको उठा लीजिए और वहां पे डाल दीजिए, तो 5 मिल गया आपको एक सबसेट। और भी देख लीजिए एलिमेंट्स की तरफ जाइए, अभी सिंगलटन ए आएगा जो कि यहाँ पे एक सबसेट बनेगा, उसके बाद आप डबल को जाएंगे, लेकिन डबल को जाते समय आपको यहाँ पे एलिमेंट डबल मिलेगा नहीं, तो क्या होगा आपका डायरेक्टली वी हैव रीच अप टू द होल सेट मींस 5 and the set itself are the subset of this singleton A. Okay, and again you know 5 and itself are its universal subsets. Okay, now by default 5 और अपना inverse singleton set will become its subset. Okay, इसमें कुछ नहीं था, तो चलो देख लेते हैं next example. What next example is saying? Second is set is A and B. Okay, that I will write here. You can see on your screen also. Your second is example nothing but A and B. Okay, this is your set. Now I want to find all subset of these sets. Okay, तो हमारे जैसे कि आपने स्टार्ट किया था डायरेक्टली 5 को उसमें डाल दीजिए, राइट? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 5 का सबसेट रहेगा हर एक का, तो जाएंगे अभी सिंगलटन्स पे। ओके, नाउ गो फॉर सिंगलटन्स। दिस इज A is your subset. Again, why A is subset? All elements of this set I am writing in curly bracket. Therefore, all elements of A are in A. All elements means तो एक ही एलिमेंट तो वो तो उसमें जाएगा ही। ओके, second is singleton B. Okay, all singletons will become subset of that set. Now मैं जाऊंगा डबल टर्न के लिए, इसमें आएगा मेरा डबल A, B. Okay, now A, B has covered the whole set. Then therefore मैं और सबसे बिग सबसेट पर रीच किया है मैंने, इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉप हो जाऊंगा। तो मेरे सबसेट कितने आ गए 1 2 3 and 4. These are your subset of A and B. Okay, now अगर आपको एलिमेंट दिख रहे हैं तो उनके सबसेट लिखना बहुत ही इजी है, क्योंकि आपके पास फाइनाइट एलिमेंट्स है। अगर इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स है तो आप ऐसे डायरेक्टली नोट डाउन सबसेट नहीं कर सकते। ओके, तो ठीक है, आपको देख लेंगे एलिमेंट इनफाइनाइट जब भी एलिमेंट रहेंगे उसके बारे में। ठीक है, अभी तो हमें थर्ड सेट में मिल रहा है, थर्ड एग्जांपल में क्या मिल रहा है? It is nothing but 1 2 3. Okay, this is my set again 1 2 and 3. Okay, this is my set. I want to find the subset of this set. तो ये तो सबका सबसेट होता ही है, इसको बाय डिफॉल्ट आप बंद करके डाल दीजिए आपके सबसेट कलेक्शन में। ओके, इसके बाद जैसे कि मैंने बताया
जब भी एलिमेंट दिख रहे हैं तो जाइए सिंगलटन की तरफ, सिंगलटन आपको बहुत सारे सबसेट दे देंगे, ओके, दिस सिंगलटन इज योर सबसेट ऑफ दिस सेट, ओके, बाद में आएगा सिंगलटन 2 भी आएगा, सिंगलटन 3 भी आएगा, ये सब मेरे सिंगलटन मैंने कवर कर लिए, सिंगलटन बिकम सबसेट एवरी टाइम. नाउ नेक्स्ट, what is the next subset? I can go for doubletons. Now what that will be? My 1 and 2, try all combinations, okay, this will be 2, 3 and one more combination will be 1, 3. Check whether these doubletons are subset of this or not, whether all elements of this set, I am saying set, are elements of this or not. Yes, that elements are in this, therefore this has become subset of 1, 2, 3. Similarly 2, 3 is in 1, 2, 3, therefore it has become subset. Likewise 1, 3 has become your सबसेट ऑफ दिस. ये तो हो गया डबलटन्स के लिए. अभी हमारे तीन एलिमेंट को तीन एलिमेंट के लिए जाएंगे, तो तीन एलिमेंट का सेट कौन सा बन सकता है? 1, 2, 3. ओके, 1, 2, 3 तो बन गया आपका यहाँ पे सेट. लेकिन आप ऑब्जर्व कर लीजिए 1, 2, 3 लेने के बाद आपका जो सेट है, एक्चुअल सेट, वही उसने कवर कर लिया है, तो मैं स्टॉप हो जाऊंगा. दिस इज द बिगेस्ट सबसेट ऑफ दिस सेट, देयरफॉर आई हैव stop here. Okay, these are your subset of your 1, 2, 3. Now the last and the very important subset, fourth one, is nothing but 5. You need to calculate subset of 5. Definition को हमें स्टेप रहना है. 5 का सबसेट तो 5 रहेगा ही, डाल दो उसमें. ओके, these are your subset of एग्जांपल नंबर 3. 5 का सबसेट तो 5 हो गया है. जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, जब भी आप सबसे बिगेस्ट सेट के पास जाओगे तो वहां पे स्टॉप होना है. तो मैं शुरू करते ही एंड हो गया. मेरा 5 क्या हो गया यहाँ पे? डायरेक्टली बिगर सेट मिल गया, मतलब इसके आगे मुझे सबसेट एलिमेंट्स ही नहीं मिलेगा, तो मैं सबसेट की तरफ जाऊंगा नहीं. तो मेरे क्या मिल रहे हैं? मुझे 5 के सबसेट कितने मिल रहे? सिंगलटन 1, सिंगलटन 5 ओनली, नॉट सिंगलटन, ओनली 5 इज माय सबसेट. व्हाई दिस इज सो? क्योंकि 5 तो हर एक का सबसेट होता है. तो 5 का सबसेट क्या हुआ हमारा? ओनली 5 itself. ओके, दिस वाज योर एग्जांपल नंबर 4. तो हम डेफिनेटली इसके बाद जाएंगे एग्जांपल नंबर 5. लेकिन 5 को जाने से पहले मैं जस्ट इसके बारे में थोड़ा ज्यादा आपको बता देता हूँ. क्या बताने जा रहा हूँ मैं अभी? जस्ट लुक एट नंबर ऑफ एलिमेंट्स in your collection of subset. Just consider this as one set. Okay, पहला जो भी सबसेट का कलेक्शन है उसे मैं क्या कहूँगा? वन सेट कहूँगा. ओके, जिसे मैंने सबसेट सेट कर दिया है. क्यों कहूँगा मैं इसे सेट? दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज वेल डिफाइंड. व्हाट इज डेफिनेशन? डेफिनेशन इज व्हाट? इट इज सबसेट ऑफ सम सेट्स. ओके, therefore it has become subset. Again, this is subset. Why this is? These are collection of elements and which is subset of some set, therefore it has some definition, it has become set. Again, I will consider all these collection in terms of one set. Okay, this has become your collection. It has not stopped here it will be stopped. This is your collection. Now this I will consider it as set. Okay, look at now 5 का सबसेट 5 था, लेकिन अभी मैंने उसको एज ए एलिमेंट कंसीडर कर लिया है जिसमें मुझे सेट मिल रहा है. तो अभी फाइंड कर लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आएगा? ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो यहाँ पे लिख देता हूँ जब भी मेरा एक एलिमेंट था सेट में तभी मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 मिल रहे. जब भी मेरे एलिमेंट्स 2 है तभी मुझे मिल रहे 4. और जब भी मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है तो मुझे मिल रहे 8. जब भी मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लुक एट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आई एम सेइंग 0. 5 में 0 रहेगा तो मुझे सबसेट मिल रहा है सिंगलटन 5 मतलब 1. कुछ पैटर्न नजर आ रहा है आपको? क्या पैटर्न है? By looking at number of elements in set, you can guess the number of elements in your collection of subset of it. What this collection of subset is mean by? Firstly, this collection of subset of some set is called as power set of that set. Okay, this is the definition of power set. What power set says? Power set is nothing but collection of all subset of some set is nothing but your power set. Okay, these are nothing but connections of subset of this set, therefore it has become power set. Now we will see the relation between number of elements and the number of elements in power set of that set. Okay, here it was number of element 2, it has 2 elements. It was number of element 2, it has 4 elements. That 4 I will write it as 2 raised to 2. Okay, and here number of elements are 3. It was number of element in your power set was 8. That I can write it as 2 raised to 3.
Similarly, here number of elements was 0. Now I can write this as 2 raised to 0. Look at the pattern now. Okay, here number of elements was 1. Therefore, you have written the power 1. And now number of elements are 2. You have written power 2. Whether it is true for all n or not. Yes, it is true for all elements. All n, all natural numbers. The definition of number of elements in power set. Okay, number of elements of power set of some finite set, power set of some finite set A. Why I am saying finite set A? Since I want number of elements in that set must be some natural number. Then I will define number of elements in power set as 2 raised to n, where n is nothing but number of elements in that set, which जिसका हम अभी पावर सेट निकाल रहे हैं. तो क्या बोलोगे आप? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पावर सेट विल बी नथिंग बट 2 raised to n. n will be your number of elements in that set. This is the definition of number of elements in power set of some finite set A. Okay, तो इसी के बारे में हमें एग्जांपल नंबर 5 में मिल रहा है. How many elements has P of A? Okay, P of A is nothing but power set of A, where A is nothing but 5. Okay, that I can write from example number 4 of 4. Here your A is nothing but 5. Okay, just assume your A equal to 5. Okay, this is your A equal to 5, and you want to calculate number of elements. Okay, number of elements in P of A. Look at here. This is your P of A, collection of subsets of that set. It has singleton 5. Means how many elements it has? It has 1 element. Therefore, my power set, collection of all subset of that set will have only 1 element. That is nothing but 5. Therefore, number of elements are 1. You can. Okay, तो हम जैसे इलस्ट्रेट करके देख लेते हैं आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P of A क्या आ रहा है. तो क्वेश्चन में से पूछ रहे हैं आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस A. Okay, number of elements in power set of A, where they have given A equals to 5. Okay, now how many elements are there in 5? That is the question. Number of elements in A is nothing but number of elements in 5, which is 0. You know number of element is 5, nothing but 0. Therefore, you will find number of element in power set of A. I will write it somewhere here. Number of elements in power set A, that will be 2 raised to n. What is n? N is nothing but 0. 2 raised to 0 will be 1. Therefore, number of elements in power set A when A equal to 5 are nothing but 1 only. That is exactly the element I have written here. This was all about question number 5. Now we will see the next examples in next video. Till now कुछ problem है आपको इस वीडियो में, कुछ भी queries है तो don't forget to write in comment section and like, comment and subscribe this channel.